Hello friends, so this is your first lecture in the chemistry for the F.Y.B.Sc. Okay, so in chemistry you have two papers, chemistry paper first and chemistry paper second. Okay, so here I'm going to explain you how the workload is distributed and what are the marks for the each paper. Okay, and after that how the syllabus will be completed and which lecture will be conducted by which teacher. Okay, so whatever syllabus, whatever chemistry you are going to learn here in F.Y.B.Sc, so all the topics you have already studied in the 12th standard and 11th standard only. So here only one or 2 points which will be new for you, and that we will clear here. Okay, so we are starting in actual syllabus. So here the whole lecture will be for the introduction of syllabus. For the introduction of syllabus, what are the points, what are the concepts are included in your syllabus and how that syllabus will be completed. Okay, so see, I am Mr. Shrikant Kekane. I belongs to chemistry department. Okay, 3 more faculties are there in the chemistry department. So everybody will be there to conduct lecture of your chemistry papers. Okay, so here you must learn, or you must get to point here that which teacher is completing which topic. Okay, as all 4 teachers in your chemistry department are going to conduct lecture for the 2 chemistry paper. So that I am going to explain you here. See, this is your first lecture and here only you just get clear your point. Okay, most of the time what happens, your syllabus get completed and still student get confused which teacher is delivering lecture for which chemistry paper. Okay, so see, as I told you, here in F.Y.B.Sc you have 2 chemistry papers. You have 2 chemistry papers. Okay, so here we are going to see how the workload is distributed. So for chemistry first, there are 3 units. There are 3 units. Okay, so that unit system is there from F.Y.Sc and T.Y.B.Sc. So it was not there in your 11th and 12th standard. Remember, here you will have 3 units for each paper. So chemistry paper have 3 units, out of which some part will be delivered by Ghumre sir. Okay, some of the part will be delivered to you by Sagar sir. Okay, so these 2 faculties are going to cover your syllabus of chemistry paper first. Okay, now for chemistry paper second, some of the part belongs to me. Okay, out of these 3 units, here are also 3 units. Okay, some of the part going to delivered by me and some of the lectures are delivered by Bhagat sir. Okay, so there are 4 faculties. As I told you, most of the students get confused at the end or before the examination. So how to study the material, okay, and what part belongs to which chemistry paper. Okay, for that sake, every year I'm just doing same practice. Okay, this is just for your information. Okay, so these 3 units will be completed by these 2 faculties. Okay, some of the lectures belong to me, some of the lectures are belong to Bhagat sir. Okay, now
each paper is for 100 marks. That is, chemistry paper first is for 100 marks, chemistry paper second is for 100 marks. So here we are in the semester first. Okay, now in semester first, me and Bhagat sir are going to complete the syllabus for chemistry paper second. As I told you, this is for the 100 marks. This is for the 100 marks. Now there are 3 units. As we have seen here, there are the 3 units. Okay. Now see how the workload is divided. See, unit first will be completed by me. Okay, we'll see what is actual syllabus. This is general information for you, and unit first is there for 15 lecture. Okay, and for examination it carries 33.33 marks. Okay, now unit second will be covered by me. Okay, Kekane sir, and remaining part will be conducted by Bhagat sir. Okay, so these 15 lectures are divided into 2 parts. Okay, equally. So half of the lecture belongs to me, and half of the lecture belongs to Bhagat sir. Okay, and unit 3 is there, that is totally belongs to the Bhagat sir. Okay, totally belongs to the Bhagat sir. That unit is also again for 15 lecture. Okay, and it carries 33.33 marks. Here is also for unit second 33.33 marks. So all the syllabus will be there for 100 marks. 100 marks. Okay, so I think it is clear to you. I am repeating again. Chemistry paper first belongs to 2 faculties, Professor Ghumre sir, Professor Sagar sir. Chemistry paper second belongs to 2 faculties, that is one, some of the part belong to me, that I just told my names, Kekane, and remaining part belongs to the Bhagat sir. As you have WhatsApp group, you can communicate with the respective faculty over there. So you student and all the faculties are there in the WhatsApp group. Okay, now here for semester first we are going to cover the chemistry paper second, that is for 100 marks. Okay, so half of the syllabus belong to me, okay, and half of the syllabus belong to Bhagat sir. Okay, so see now, this is what the unit first, introduction to syllabus. Okay, as I told you, unit first totally belongs to me, and unit second is half of the part belong to me. So I am going to cover the only that much introduction of syllabus which is belong to me. Okay, so rest of the part will be covered by Bhagat sir. Okay, and all the lectures will be delivered by Bhagat sir for the rest of the part. So whatever syllabus is there with me, see, in unit first, this is for 15 lecture, right? There are 2 topics, each one chemical kinetics and liquid states. Okay, now chemical kinetics is there for 8 lecture and liquid state is there for 7 lecture. So total it will become 15 lectures. Okay, and as I told you, this is for 33.33 marks. 33.33 marks. Okay, out of your 100 marks paper. Now, chemical kinetics. This whole topic you have studied in 12th standard, 11th and 12th standard, and all the points, all the concepts we are going to repeat here. Okay, only few things are there additional that we'll see during our lecture. Okay, so in the chemical kinetics, what points are there?
in chemical kinetics, what points are there? First is the rate of reaction. Rate. What mean by rate? Okay, rate of reaction. See, for any vehicle, okay, we say that, yeah, what is the speed of that vehicle? We may say that it's a 50 kilometer per hour, 60 kilometer per hour, right? 100 kilometer per hour. Okay, so that is what the speed of that vehicle. Here, to explain the speed of reaction, speed of any particular reaction, okay, you have studied many more reaction in organic chemistry. That is your chemistry paper second in the 12th standard and 11th standard. Okay, so with the what speed any reaction is possible to complete. Any reaction is possible to complete, है ना? A पासून B product तयार होता है. Okay, you are getting product B from the reactant A. So with the what speed this is proceeding towards the B. Okay, this is converting to the B. That is what the rate of reaction, है ना? क्या स्पीड है A का कन्वर्जन B में हो रहा है, कितने स्पीड से हो रहा है, that we are going to study in the rate of reaction. And how that rate of reaction is expressed? Okay, for that there is a rate constant. Rate constant, okay, it's a constant. It's a constant, rate constant for first order reaction, for second order reaction. Okay, so this is like a, you know the gas constant, huh? So some constant we have studied in 11th and 12th standard that I am not going to repeat, but this is in the reaction chemical kinetics. So it's a rate constant. But before that, I want to explain here one thing: chemical. Chemical. Okay, you can see on your screen what I'm just focusing for. So it's a chemical, right? Chemical. And what we are studying for that? Kinetics. Kinetics. Kinetics means speed. Speed. Okay. And of what speed? We are studying the speed of chemical reaction. So this is the topic which gives you the information for to study the speed of any chemical reaction. Speed of any chemical reaction where the reactant is getting converted into the product. The reactant is getting converted into the product. Okay, so this is what the actual topic. See, now after rate constant, what we are going to do? We are going to measure the rate of reaction or reaction rates. What we are going to measure here? The reaction rates. काय आहे त्या रिएक्शनचा रेट? क्या है इस रिएक्शन का रेट, है ना, जो कि ए का कन्वर्जन बी में हो रहा है ना? क्या है इसका रेट? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, समटाइम दे मे आस्क यू to find out the rate of reaction, to find out the rate constant, to find out the order of reaction, to find out the molecularity of reaction, anything. Okay, so these are what the things which we are studying here. See now, after the rate of reaction, the measurement, okay, after the measurement of rate of reaction, we are going to see the order of reaction. What is order of reaction and what is the molecularity of reaction? Okay, these things you have studied already, but again we are going to study the order and molecularity of reaction. So student, most of the time you may think that the water things we are learning here in the chemistry, whether that things are useful for our day-to-day life or not. For your kind information, remember, whatever concept you are learning in the science, the same concept is there applicable in your day-to-day life. Okay, ये order है, ये molecularity है, rate constant है, rate of reaction है, ये जो चीजें हैं ये industry में हो रही है. And for what purpose industrialists or industry people are using this concept? They are using to manufacture different products which you are using in your day-to-day life.
like you are using cosmetics, है ना, talcum powder is there, lipstick is there, perfumes are there, deodorants are there, medicines are there, food products are there, है ना, different chemicals are there, oils, hair oils are there, है ना, different oils are there, edible oils are there. So for all these things, to manufacture all these things, these whatever concepts you are learning here are the useful. People are using these concepts. Okay, so if you see all these concepts in your practical way, okay, or where we are using in our day-to-day life, so it will become more interesting to learn. Okay, so slowly when we start our topic, we'll go in detail. Okay, now see, order of reaction. Order. So this is helpful to study the any reaction. Okay, and we are focusing particularly for order of reaction. Okay, we are going to study here first order reaction. As you can see, why we are focusing here, as I said you, that we are going to study first order reaction. After that, second order reaction. Okay, after that, zero order reaction. After that, pseudo. Okay, we'll see that one by one, no problem. But here, first order reaction is there, second order reaction is there. How we are studying this reaction? With equal initial concentration. You know, suppose you have moiety A and a reactant B, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, और ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने के बाद C बन रहा है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहेगा, तो रिएक्शन की ऑर्डर क्या रहेगी? ओके, तब रिएक्शन की ऑर्डर क्या रहेगी? तो whether it is a first order or whether it is a second order or whether it is a zero order, that we are going to study over there in detail. So after that we'll see numericals. These numericals helps us to find out the order of reaction. Okay, this is what particularly for the order of reaction we are focusing more for the order of reaction. Again, molecularity of reaction is also there. कितने टाइप के मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो कितने टाइप के हो गए? दो हो गए, तो ये इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? दो होगा। यहाँ पे सिर्फ ए टाइप का मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्ट हो रहा है और उससे क्या बन रहा है? बी बन रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हुआ? एक हुआ। बट रिमेंबर द ऑर्डर इज डिफरेंट वन, है ना। यहाँ पे इवन दो मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसका ऑर्डर में भी 0, में भी 1, में भी 2, में भी दैट आई एम सेइंग हियर, है ना। इसका ऑर्डर हम जज नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स। और वो मेथड्स कौन से हैं ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए? किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है ना फाइंड आउट करने के लिए कौन से मेथड यूज करेंगे? एक है तो इंटीग्रेशन मेथड है ना। You have studied derivative and integration in 11th and 12th standard. Those students who not have the mathematics as their subject, they have to study some basic mathematics for the chemistry. That topic is also there available, so from there you will get the idea. Okay, so for finding out the order of reaction, we are studying the integration method. After that, one more method is there, that is a graphical method. Graphical, with the help of graphs, we can find out the order of reaction. We can find out the order of reaction. Okay, again the point comes, why we are going to find out the order? After finding out the any order, that will help us to synthesize any compound in a better way. Okay, in a better way, like it's a quality, it's a quantity. Okay, different things comes under that. Okay, so we'll see that during our lecture session. This is what just an introductory part for you. Graphical method is there. Okay, after that, Ostwald's isolation method. Isolation, है ना, किसने इन्वेंट किया है? ओस्टवाल्ड सर ने इन्वेंट किया है। तो इसमें हम आइसोलेशन मेथड करेंगे स्टडी, है ना। ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन। ये ग्राफ से हम फाइंड आउट करते हैं। इधर इधर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फॉलो करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। इधर ग्राफ फॉलो करके ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, है ना। अलग अलग ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का अलग ग्राफ आता है, सेकंड ऑर्डर का अलग ग्राफ आता है, जीरो ऑर्डर का अलग ग्राफ होगा। एंड हियर ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हाफ लाइफ और हाफ टाइम मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ टाइम मेथड। एंड ऑल दीज फोर मेथड्स, देयर आर द expected numericals. Expected numericals. Remember, in the chemistry, if you want to make your mastery, you need to solve maximum examples. It's a very important to make mastery on any concept. To get the command on any concept, we need to find out as much as possible the examples on that particular or for that particular concept. Okay, even we teacher also, you know, if you solve 5 to 10 example per day, it's not a big deal. So 5 to 10 questions per day only, okay, are the examples. And if you see at the end of the month, you will have more than 150 examples in your hand, okay, and you need to dedicate only 15 to 20 minutes per day to solve the 4 to 5 examples. But these 20 to 25 minutes per day will help to get the mastery on that particular topic. Remember, okay. So here you can see in organic chemistry also reactions are there. There are not examples, but we are focusing their reactions. Here are the examples in chemical kinetics, as this is a part of physical chemistry. Okay, now this is a topic second from your unit first. Topic second from unit first. So what is the topic? Liquid states. लिक्विड स्टेट्स है ना। हम देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में है क्या, कि हम हेयर ऑयल यूज करते हैं, बराबर, हम पानी पीते हैं, है ना, हम डिओड्रेंट्स है, परफ्यूम्स है, एडिबल ऑयल्स हैं, बराबर ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम, है ना। तो दीज आर द लिक्विड स्टेट्स, ओके। उसके बाद अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो लिक्विड के स्टेट्स कह रहे हैं वो, ऐसे क्या है स्टेट्स यहाँ पे लिक्विड के, है ना। व्हेन यू cool the liquid, liquid get converted to the solid. Liquid get converted to the solid. If you heat the liquid, that liquid get converts to the vapor. It get converts to the vapor. Now लिक्विड स्टेट है ये पता है हमें, एक स्टेट है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट इज देयर, है ना। लेकिन is there any chance of having few more states in the liquid, है ना। so that we are thinking here, है ना। ये लिक्विड है ये हमें पता है, इसकी स्टेट लिक्विड है ये हमें पता है। तो ये हम कैसे स्टडी करेंगे, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें क्या हेल्प करते हैं, इसका हमें डे टू डे लाइफ में क्या यूज है। रिमेंबर, so whatever property we are going to study under the liquid state, due to that property only all living things are possible to survive on the planet Earth, okay. And whatever balance is there maintained on the planet Earth, okay, that is due to all these properties of liquids, है ना। तो ये कैसा है, ये अभी हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। यू विल स्टडी ओवर दैट कि ये सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना। उसके बाद नया अभी देखा है हमने कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, LCD, जो कि हमारे मोबाइल के स्क्रीन है, लैपटॉप के स्क्रीन है, टीवी के स्क्रीन है। भाई ये क्या है, लिक्विड भी कह रहे हैं और क्रिस्टल भी कह रहे हैं, है ना। टॉपिक का नाम तो लिक्विड है, लेकिन ये अभी नया कौन सा स्टेट आ गया यहाँ पे और इसका यूज क्या है, विल सी दैट इन द डिटेल वन बाय वन।
So in this topic, see, surface tension, ये जो surface tension है ना, ये सरफेस टेंशन की वजह से ही बारिश होती है। सरफेस टेंशन की वजह से ही हमारे बॉडी में वो पानी जो है वो काम कर रहा है, वाटर जो है काम कर रहा है। हमारे बॉडी में हर एक सेल में है ना, अगर हम देखेंगे तो अबाउट 90 to 95% और इवन मोर देन दैट वहां पे वाटर है इन ईच एंड एवरी सेल। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, है ना। हर एक सेल में कितना पानी है, और ये पानी उधर कैसे रह रहा है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस टेंशन, otherwise we cannot survive. We'll see that in the detail in actual syllabus. Okay, तो ये बारिश हो रहा है, क्यों हो रहा है, that is due to the surface tension. तो इस सरफेस टेंशन के अंदर ये क्या है ना, ये प्रॉपर्टी है इसका, देखो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है, और ये अलग सा थोड़ा सा है जो कि लिक्विड क्रिस्टल हम स्टडी करने वाले हैं। तो सरफेस टेंशन में वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन, क्या है ये सरफेस टेंशन। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड ऑल दिस प्रॉपर्टीज, आई नो इट वेरी वेल, दैट इज देयर इन योर 11th-12th स्टैंडर्ड। लेकिन इसका यूज क्या है, सच में ये हमारे लाइफ में कुछ रोल है क्या इसका, केमिस्ट्री में कुछ रोल है क्या इसका, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्ट्रीम, ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके। इवन इन हायर स्टडीज इफ यू गो फॉर PhD यू कैन डू द मैथमेटिक्स और हियर आल्सो। सरफेस टेंशन, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हाउ वी कैन फाइंड आउट सरफेस टेंशन of any liquid, okay, and for that we are going to use drop number method. For that we are going to use drop number method, एक इंस्ट्रूमेंट है वो हम स्टडी करेंगे, ये ड्रॉप नंबर मेथड क्या है, ओके, उसके हेल्प से we can find out the surface tension of any liquid, है ना। देखो हनी है हमारे पास पानी है ना, दोनों का सरफेस टेंशन सेम नहीं रहने वाला है, पानी का सरफेस टेंशन अलग रहेगा, हनी का अलग रहेगा, है ना। तो दैट हेल्प अस, ओके, और उसके बाद हम उसके एग्जांपल भी स्टडी करने हैं। विस्कोसिटी है, अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ हनी एंड वाटर। वाटर की विस्कोसिटी कम है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। हनी अगर आप थोड़ा सा फिंगर पे लोगे और पानी लोगे तो वाटर कैन इजीली स्प्रेड ऑन योर फिंगर, बट हनी कैन नॉट, है ना, उसका विस्कोसिटी ज्यादा है। तो ये हर एक चीज का और हर एक लिक्विड का अलग अलग विस्कोसिटी है और उसका इंपॉर्टेंस है। उस विस्कोसिटी की वजह से हमारे डे टू डे लाइफ में हम उसको यूज कर रहे हैं। ऑयल है और पेट्रोल है, पेट्रोल यू कैन यूज एज अ फ्यूल, बट ऑयल यू कैन यूज एज ए लुब्रिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स विस्कोसिटी, ओके। दीज आर द माइन्यूट थिंग्स, ओके। सो इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हर एक कंसेप्ट जो हम लर्न करेंगे केमिस्ट्री के अंदर वो ऐसे ही नहीं लर्न कर रहा है, उसका हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, वो काम कर रही है ना। नाउ सी हियर, विस्कोसिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, है ना। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये जो टर्म आते हैं ना वो उस प्रॉपर्टी के स्टडी के लिए ये टर्म आते हैं उसके अंदर, है ना। ह्यूमन बॉडी स्टडी करनी है तो अलग अलग तरह से स्टडी कर सकते हैं। हम उसका वेट लेंगे, है ना, हम उसका मतलब वी कैन स्टडी बाय द डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना, उसका हाइट लेंगे बॉडी का, तो ये चीजें आती है। वैसे ही इधर अगर विस्कोसिटी स्टडी करने हैं, इफ वी वांट टू स्टडी द विस्कोसिटी वी नीड टू स्टडी डिफरेंट थिंग्स अलोंग विद दैट, ओके। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज देयर, रिलेटिव विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो है लेकिन ये रिलेटिव विस्कोसिटी मतलब एक के कंपैरेटिवली दूसरे की कितनी है ना। तीसरा है स्पेसिफिक विस्कोसिटी, इसका स्पेसिफिक खुद का कितना है, पर्टिकुलर फॉर दैट लिक्विड। देन रिड्यूस विस्कोसिटी, ये कैसे विस्कोसिटी रिड्यूस होती है, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, भाई क्यों विस्कोसिटी जो है रिड्यूस होगी। पानी की तो एक विस्कोसिटी है, हनी की एक है, लेकिन अलग क्यों है और एक की रिड्यूस क्यों हो गई। What are the things responsible for that? What is the reduced viscosity that we are going to study? Then how we can determine the viscosity, है ना। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे सरफेस टेंशन के लिए ड्रॉप नंबर मेथड यूज किया, तो विस्कोसिटी मेजर करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज ओस्टवार्ड्स विस्कोमीटर। ओस्टवार्ड्स
viscometer is there. Okay, this is what the name of scientist, Ostwald. Okay, और उन्होंने ये इन्वेंट किया है viscometer, तो वो Ostwald's viscometer है. This practical you are going to conduct in the chemistry laboratory. Okay, this is also there in chemistry laboratory. Even refractive index is also there. I think you might have been studied the refractive index in physics also. Okay, or that is practical there. Okay, so see in refractive index introduction क्या है refractive index, वो introduction में आएगा, है ना. हर एक चीज का थोड़ा सा ब्रीफ जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है. जैसे कि मैंने मेरे फर्स्ट स्लाइड पे लिख के रखा है, क्या लिख के रखा है, ये मेरा है इंट्रोडक्शन, है ना. दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन. तो हर एक कंसेप्ट का केमिस्ट्री में क्या है कि ये चीज क्या है, तो वो उसका इंट्रोडक्शन हो गया, है ना. उसके बाद देखेंगे हम मोलर रिफ्रैक्शन. मोलर रिफ्रैक्शन, okay, this is what the concept related to this. Then polarizability, वो कितना लाइट पोलराइज करता है. लाइट अगर उसके ऊपर फॉल होता है तो वो पोलराइज कितना करता है, कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, है ना, कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है उसके एंगल को जो उसके ऊपर फॉल हो रहा है, वो स्ट्राइक हो रहा है वो. Then we are going to determine refractive index by Abbe's refractometer. यहाँ पे क्या है, Ostwald's viscometer. For viscosity it's a Ostwald viscometer, and for refractive index it's a Abbe's refractometer. Abbe's refractometer, हाँ नेम है, इसके पीछे नेम है. देखो अब एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, अगर उनको विस्कोमीटर पूछते हैं तो वो ये रिफ्रैक्टोमीटर का इंफॉर्मेशन लिख के रखते हैं बच्चे, और अगर विस्कोमीटर पूछते हैं ओस्वाल्ड विस्कोमीटर का तो ये रिफ्रैक्टोमीटर का इंफॉर्मेशन लिख के रखते हैं ना. लेकिन इसके पीछे ही नाम है ना, दैट यू शुड गेट क्लियर हियर. ओके, नाउ some examples are there, numerical examples are there that you can study over there. Okay, that we are going to study over there, numerical examples. So whatever numerical examples are there that we have already studied in the 11th and 12th standard, same examples we are going to repeat here. Okay, so again I am repeating here. For surface tension you are using drop number method. For viscosity you are using Ostwald viscometer, and for refractive index you are using Abbe's refractometer. Okay, now liquid crystal. तो ये liquid state topic में liquid crystal is also there. ये क्या है भाई नया, तो ये नया कुछ नहीं है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं ना. जैसे कि you know you are using computers, you are using laptops, you are using TV, you are using mobile phones. तो LCD कभी सुना है आपने हमारे देश में? we are just है ना, this is very familiar. LCD liquid crystal display. तो वो liquid crystal display जो है ना, तो ये इधर आप स्टडी करोगे कि उसमें क्या चीज यूज होती है, कौन से केमिकल है जो आपको, और कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हमें हेल्प कर रही है वो बनाने के लिए. जो अभी आपका मोबाइल का स्क्रीन देख रहे हैं, वट एवर लेक्चर यू आर लिसनिंग एंड आई एम डिलीवरिंग फ्रॉम हियर, सो आई हैव वन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी, यू हैव वन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. दैट स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, एंड हाउ दैट क्रिस्टल आर एबल टू शो यू द डिफरेंट कलर्स, है ना. मेरे स्क्रीन पे मैं जब मार्कर से ये कर रहा हूँ, पॉइंटर से लिख रहा हूँ, तो देखो कुछ येलो कलर दिख रहा है. आपके स्क्रीन पे अगर देखोगे आप तो नेम जो है हेडिंग का अलग कलर दिख रहा है ना. उसके बाद फिर हर एक चीज का अलग कलर दिख रहा है. वो कैसे दिख रहा है, हाउ दैट इज पॉसिबल? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. तो ये इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम. ओके, और ये लिक्विड क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन है. ओके, एंड देयर स्ट्रक्चर. ओके, ये जो है फेजेस है, उसका निमेटिक फेज है. ये थर्मोट्रोपिक ऑन द बेसिस ऑफ हीट. हाउ दे, थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट, यू नो इट वेरी वेल, है ना. थर्मोमीटर कहते हैं ना, थर्मो मीन्स हीट. सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंट फेजेस आर देयर.
कौन से हैं? वन इज निमेटिक फेज, अदर इज सीमेटिक फेज, एंड नेक्स्ट इज कोलेस्टेरिक phase. So these are the phases we are studying for the liquids. Okay, and how that phases are possible to study, how they are that we are going to or we are able to study, that is on the basis of heat, on the basis of heat. Okay, now what are their applications, है ना? इसमें से कौन सा फेज कहाँ पे यूज होता है? न्यूमेटिक फेज कहाँ पे यूज करते हैं, सीमेटिक कहाँ पे यूज करते हैं, और कोलेस्टेरिक कहाँ पे यूज करते हैं ना? जो कि मोबाइल में कौन सा यूज होता है, कंप्यूटर में कौन सा है, टीवी में कौन सा यूज होता है ना? लैपटॉप में कौन सा होता है? सो तो ये जो है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर अंडर द एप्लीकेशंस. ओके, अंडर द एप्लीकेशंस. सो this is what your unit first. Now unit second. Unit second. The unit second जो है, as I told you, this is divided into the two parts. This is divided into the two parts. So out of this 15 lecture, okay, half of the part belongs to me and half of the part belongs to Bhagat sir. Okay, as I have discussed earlier. So that half part only I am going to discuss in front of you, because remaining part is going to discuss by Bhagat sir. Okay, वो डबल कुछ करने में ये नहीं है. तो okay, now from here, whatever part is there in the box, that I am going to cover. So from the unit second I am talking about, from the unit second. Now unit second में से हाफ पार्ट मैं लेक्चर कंडक्ट करने वाला हूँ. इसका ये जो ऊपर का पार्ट है ये भगत सर कंडक्ट करेंगे अप टू डायगोनल रिलेशनशिप. और यूनिट थर्ड, इसके बाद जो यूनिट थर्ड है वो भी भगत सर को बिलोंग करता है. तो फ्रॉम यूनिट सेकंड वी आर गोइंग टू स्टडी कंपैरेटिव केमिस्ट्री. कंपैरेटिव केमिस्ट्री ऑफ व्हाट? कार्बाइड्स. ये कार्बाइड्स क्या है? किसी भी एलिमेंट का कार्बन के साथ अगर कुछ कंपाउंड बनता है तो उसको कार्बाइड कहते हैं. पीरियोडिक टेबल में से किसी भी एलिमेंट का नाइट्रोजन के साथ अगर कुछ कंपाउंड बनता है तो उसको नाइट्राइड्स कहते हैं. पीरियोडिक टेबल में से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ अगर कुछ कंपाउंड बनता है तो उसको ऑक्साइड कहते हैं. पीरियोडिक टेबल में से किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ कुछ कंपाउंड बनता है, सब्सटेंस बनता है, तो उसको हाइड्रोक्साइड ओके, दिस इज हाइड्रोक्साइड, नॉट हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स में बी दैट इन द लेटर ऑन इन योर हायर स्टडी. सो किसी भी एलिमेंट्स का हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड जो कि OH ग्रुप है, इसके साथ अगर कुछ बनता है तो उसको क्या कहते हैं? हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, है ना. इधर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में से, इधर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे और इधर कार्बन के साथ कंबाइन हो रहे, है ना. तो अब इजीली अभी आपको पता चलेगा, कोई एलिमेंट है और वो कार्बन के साथ है तो उसको कार्बाइड कहेंगे. कोई दूसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन के साथ है सिर्फ, तो उसको नाइट्राइड कहेंगे. कोई अदर एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ है तो उसको ऑक्साइड कहेंगे. अभी यहाँ पे कैल्शियम का है नीचे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये क्या हुआ? ऑक्साइड हुआ. किसका हुआ? कैल्शियम का हुआ. पता चल रहा है ना. अभी ये हाइड्रोक्साइड है, OH है. किसका है? ये हाइड्रोक्साइड के साथ कौन आ गया? सोडियम आ गया. तो ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना. इधर ये सोडियम का क्लोराइड हो गया, है ना. ये वो तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने ये ऐसा एग्जांपल दिया है नीचे, तो आपको फोकस किया है वहां पे. हाइड्रोक्साइड है ना. सो कौन से, अभी मैंने किसी भी एलिमेंट का कह दिया आपको, लेकिन इधर आपको जो पर्टिकुलरली फोकस करना है वो दिस इज फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, जो पहले दो आपके जो कॉलम है ना पीरियोडिक टेबल के, फर्स्ट ए सेकंड ए, फर्स्ट ए सेकंड ए,
ये जो सभी के सभी एलिमेंट जो है ना, ये अगर कार्बन के साथ कंबाइन होते हैं तो कार्बाइड्स कहेंगे, है ना। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गए तो ऑक्साइड कहेंगे, है ना। ये जो मतलब कौन से, इधर सपोज की पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना। नीचे कुछ पीरियोडिक टेबल इधर दिखाया नहीं है मैंने, लेकिन पहले जो कॉलम हो गए दो पीरियोडिक टेबल के, उसके बारे में कह रहा हूँ। नाउ इन डिटेल, है ना, क्या स्टडी कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये है ना। क्या है ये, भजिया बनाते हैं घर में तो उसमें जो सोडा डालते हैं ना, तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। या एसिडिटी होती है तो इसको पानी के अंदर डाल के हम पी जाते हैं, है ना। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो देयर, सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो देयर। देन उसके बाद सोडियम क्लोराइड जो हम नमक खाते हैं उसका भी स्टडी करेंगे यहाँ पे, है ना। ये भी हम यूज करते हैं भजिया में। ये नमक, ये आपका नमक है ना। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये इसको भी हम कुछ वॉशिंग में यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, केमिस्ट्री लैब में हम हमेशा यूज करते हैं, या इंडस्ट्री में आपको जो डे टू डे लाइफ में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बनाने के लिए यूज करते हैं। ये ऑक्साइड है कैल्शियम का, ये भी इंडस्ट्री में यूज होता है हमेशा। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, आपका जो चौक है ना, चौक डस्टर, है ना, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो टीचर लिखते हैं ना, तो वो चीज जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो वो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा क्यों किया है, इसको नमक कह दिया, है ना, इसको खाने का सोडा कह दिया, है ना, इसको चौक कह दिया। ये क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपको ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं देखना है ना। What happens, CaCO3, ये चीज, if you only learn the yeah CaCO3, so it seems to be somehow, you know, the, है ना, कुछ ये चीज अलग सी लग रही है। लेकिन जब मैं इसको चौक कहता हूँ सीधा, है ना, चौक पाउडर में है तो ये है, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में मजा आ रहा है उसमें। ये ना नमक कह रहा हूँ, इसको नमक कह रहा हूँ, तो ये भी चीज देखने में मजा आ रही है इसमें, है ना। अरे ये नमक है, ये हम खाते हैं हर रोज, है ना, तो इसका स्टडी हम कर रहे हैं। ये सोडा है ना, तो इसकी वजह से मैंने कह दिया यहाँ पे। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर आल्सो देयर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ऑक्साइड कहते हैं। आप कहेंगे सर फिर इसको कार्बाइड क्यों नहीं कहा हमने, है ना, सीओ लिख दिया मैंने। ये कहते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जो कि दूसरा कोई भी जो इस कॉम्बिनेशन में है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी ना, उसका नेम क्या आएगा, पैरेंट आएगा। दिस इज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दिस इज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, है ना। दिस इज हैलाइड ऑफ सोडियम, है ना। तो उसकी वजह से ऑक्साइड कह दिया मैंने इसको भी। जो भी पीरियोडिक टेबल में से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, फ्लोरीन की भी बहुत ज्यादा है, बराबर ना। तो ये पैरेंट बन गए और दूसरा उसके साथ अटैच हो रहा है। उसके बाद है ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। किसके स्टडी करेंगे, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसको वो सल्फर का ऑक्साइड हो गया, और उसका एसिड जो है हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया तो वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, और उसका एसिड पता है हमें HNO3 होता है, बराबर ना। तो वो एनवायरनमेंट के रिस्पेक्टिवली हम स्टडी करने वाले हैं, उसके एनवायरनमेंट में क्या यूज है ना, उसके क्या मायने हैं, है ना। तो हम इसके ऑक्साइड देखेंगे पहले, सल्फर के और नाइट्रोजन के। उसके बाद उनके एसिड्स देखेंगे, है ना, वो सल्फर के एसिड्स कौन से हैं और नाइट्रोजन के एसिड्स कौन से हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द syllabus which I am going to cover in this semester, okay. And you need not to worry, because all the lectures will be made available on your YouTube. The same thing I am going to continue. I will first I will just record my lecture, and that I am going to upload on the YouTube. Because what happens when you people are connecting with me on Zoom, so during that period, due to the network error, the screen also not properly visible to the student who belongs to the hilly area, okay. So
during your leisure time, whenever you are free, or if you are interested to watch or listen lecture anywhere, you can watch it. Okay, so this is what all about the syllabus from the chemistry paper second in the semester first, okay, which is belongs to me. Remaining part will be covered by Bhagat sir. Okay, remaining part will be covered by Bhagat sir for paper second, chemistry paper second. Okay, so this is all about your syllabus. Okay, again I am just taking one look on the whole syllabus. So in unit first, we are going to learn the chemical kinetics. In the chemical kinetics, these are all things which we are going to learn. Okay, then second topic from the unit first, second topic from the unit first is a liquid states. Okay, इसमें हम तीन प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हर एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल भी देखेंगे हम उसके बाद the method which are used to study the surface tension. Okay, so see, this is what the method used to study surface tension. Drop number method. For study viscosity, we are using Ostwald viscometer, and to study the refractive index, we are using a base refractometer. Okay, after that we are studying liquid crystal. Okay, as I told you that you are using this is in your day-to-day life. Okay, all the properties are very important for us. And this is unit second. Out of unit second, the half of the syllabus I am going to cover that already I have discussed, in which we are going to study the carbide, nitride, and carbide, nitride, oxides and hydroxides of group first and group second element. Periodic table के जो लेफ्ट एंड में जो दो कॉलम है ना, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, मैंने बोला आपको, हम जो एसिडिटी होने के बाद जो यूज करते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ये सॉल्ट है हमारा नमक डे टू डे लाइफ का, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है. उसके बाद कार्बन के जो ऑक्साइड्स है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. उसके बाद ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर के ऑक्साइड स्टडी करेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड स्टडी करेंगे, और दोनों के एसिड जो है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, दिस इज फॉर ऑल in today's lecture. Thank you. Okay, so in the next lecture we are going to start our first topic.